speaking. And when Siddharth is speaking, Somesh Pathak, when Siddharth starts speaking, please come up and pick up your chip. Okay? Somesh Pathak, are you here? Somesh Pathak. Somesh. Mayank Mishra. Anjali Singh. Guys, 1.5 minutes to think and also 1.5 minutes to speak. If you exceed the time limit, you will be getting negative marks. Ma'am, negative marks जो time limit exceed करे. Okay guys, we'll start. And when you start speaking, please tell your name and whatever, give a short and two-line introduction. Name, college. Good afternoon, respected jury and my fellow science enthusiasts. I have been given the topic of scattering of light in the external competition. So, what is scattering of light? When light, which is a packet of quanta, encounters any particle, some of the light gets reflected and some of the light gets absorbed. So light being an electromagnetic ray, some wavelength in the electromagnetic ray is absorbed and some of it is reflected. And this splits the white light into its constituent colors, and this scattering of light is responsible for many physical phenomena which we can observe in the daily life. That is the blue color of sky or the twinkling of the stars, or why we use red color as a signal to stop, because scattering of light determines which color would be seen during a physical phenomena which we are interacting with light. Like we observe blue sky because of the phenomena of scattering of light. Blue is the shortest wavelength. This is Mayank, and I am from University of Lucknow only, and I am going to talk about differentiation. So, हम सब ने differentiation के बारे में पढ़ा हुआ है अपनी क्लास 12th में, और बहुत बार हमने इसके क्वेश्चंस भी किए होंगे, let's say dy by dx, dz by dx, but it's more than just differentiating a function. काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन का जो बेसिक यूज है वो ये पता करने के लिए कि व्हाट इज द रिलेटिव इंक्रीज पर समथिंग विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल. साथ ही साथ लेट से एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ जो है वो लेट से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का है. तो इन केस अगर आप उसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 3x² मिलता है. बट आप सोचोगे इसका क्या मतलब है? इससे ये हमें पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन है वो x में अगर बहुत ही छोटा चेंज करेंगे तो वो 3x² के हिसाब से बढ़ रहा है. साथ ही साथ जैसे हम लोग डबल डिफरेंशिएट करना भी सीखते हैं, तो डबल डिफरेंशिएट में क्या हमें पता चलता है कि जो टेंजेंट है उसमें कितना हम छोटा सा इंक्रीज अगर करते हैं तो हमारा कितना बढ़ता है. साथ ही साथ अगर
डिफरेंशिएशन का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके। सो अब ये v क्या है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जब आप कार ड्राइव करते हो तो जो स्पीडोमीटर पे आपकी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे दिखाता है, पर्टिकुलर मोमेंट पे जो थैंक यू। स्पीड दिखाता है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। So differentiation plays a very important role in our lives, and I think everyone must learn how to do it so that it can help some way or other in their life. Thank you. Please clap. Guys, please give a round of applause to all the participants as they will be, feeling encouraged, right? Thank you. Somesh Pathak. Somesh is not here now. Anjali reached. Good afternoon, everyone. My name is Anjali Singh. I am pursuing my MSc Botany from KKC College. Now here my topic is algebra. As we all know that algebra is a topic of math which we study from our 6th to 7th class, and this topic is so important for our math subject and our life also. And in algebra there are so many equations which are based on our life. Right now I am not remember the equations of algebra, but this algebra topic is very helpful for BTech and engineering students. So thank you. I don't know any more things for this topic. यूट्यूब पे देखो, आज कल परसों डेली हम लगा रहे रोशन जवान and समीर बर्ला. भाषा वाले प्रोग्राम में जिनका आगे लगा देगा। हैं, हम डेली रामलीला से आगे रोशन जवान and समीर बर्ला. देखो गजब का पूरा आया, मतलब पूरा यार कवर कर रहा था, हमने गौर नहीं किया, वाइड इमेज ले रहा था, ये नहीं कि कट रहा हूँ कोई कटिंग। मेरा नाम सुमेश है और मैं MSc केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर से हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है, I'm so sorry to interrupt. Actually, because of some time crunch, we have a very eminent professor, scientist here who will be delivering a lecture. So since we don't want them to wait much, so we are cutting down the time for extempore by half a minute. So instead of 90 seconds, please speak for 1 minute. Ma'am, this is the change because we have to wrap up fast. So 1 minute, 1 minute thinking time and 1 minute to speak. Thank you. वंस अगेन मेरा नाम सुमेश है और मैं MSc केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर से हूँ। मेरा टॉपिक है कि द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंज। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा एशियन टाइम था उसमें जो भी सूचना होती थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बहुत मुश्किल होता था। और आजकल तो हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कबूतरों की मदद से हम लोग कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे, वरना रियलिटी में देखा जाए तो लोगों को देखा जाता था कि वो लोग जाते थे और मैसेज लेके जाते थे। राजा राजाओं के समय में सूचनाओं को लिख करके ले जाया जाता था जिसमें बहुत सारा टाइम लगता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे पास यातायात के साधन बढ़ते गए और सन 1849 में जब एक ऐसा ग्राहम बेल ने जब हमारा टेलीफोन का आविष्कार किया तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति था सच में कम्युनिकेशन के फील्ड में, कि हम किसी भी तरीके से एक वायरलेस माध्यम से हम अपनी जो मैसेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। तो उसके बाद में बीच में जो वार्स हुए जिसमें बीच में अमेरिका वॉर हुआ, अमेरिका सिविल वॉर हुआ या फिर जितने भी वॉर्स हुए उसमें भी बहुत सारा जो सूचना थी उसको अलग अलग तरीके से मैसेजिंग से और कोडिंग से भेजा गया। और आज जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। थैंक यू। Shitoshna Rastogi and Tanya Srivastav. Hello everyone, my name is Roshan Jha. I am MSc Botany. My topic is chemical reactions, types of chemical reactions. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केमिकल की रिएक्शन हमारी सेल्स में भी होती हैं और हमारे डाइजेशंस में भी हमारे काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जिनसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम रेस्पिरेशन ले लें, डाइजेशन ले लें, या फिर किसी प्लांट्स में भी जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। और केमिकल रिएक्शंस हम बाकी जगहों पर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई मिनरल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Hello everyone, my name is Shidor Rastogi. Well, the topic which I got is elections in India. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर ग्लैड कि 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। एंड तब से लेकर आज तक इंडिया में बहुत ही बड़े स्केल पे इलेक्शंस होते हैं एंड पार्टीज जो होती हैं वो अपनी रैलीज होल्ड करती हैं एंड पीपल दे अंडरस्टैंड कि उनको किस लिए वोट करना है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चूज़ करती हैं। जैसा कि आजकल का वैसे नॉर्मल ट्रेंड है इलेक्शंस में कि सब जो पार्टीज हारती हैं काइंडली जिससे कि ईवीएम्स में गड़बड़ है या ऐसा कुछ है। अमेरिका में भी यही हो रहा है। ये थी ट्रम्प एंड जो बाइडन, राइट? द फाइट इज गोइंग ऑन एंड ट्रम्प इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट ही लॉस्ट टू जो बाइडन। सोक्रेटिस ने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो अल्टीमेटली इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप एक प्लेन में हो और अगर बाई चांस आपको टर्बुलेंस महसूस हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे? उन लोगों के पास जो कि सेम बोट में या फिर पायलट के पास। सो सोक्रेटिस नेवर थॉट कि डेमोक्रेसी वाज अ गुड आइडिया। थैंक यू सो मच। Ayushi Yadav and Preeti Bajpai. Hi everyone, this is Tanya Srivastava from LPCPS and I'm currently pursuing BCA and my topic is geometry. Okay, so starting with geometry, it is almost everywhere around us, in almost everything. The matter with which I'm speaking, it is also pertains to a certain angle, so that is also geometry. It's in almost everything, in the constructions, in metros, and you also have coordinates in those, so we use that in satellites, we use those in photography. So wherever you go, wherever you see shapes, sizes, in this test, there is everything is geometry. From the construction of those stairs to these tables, to those cameras, to everyone sitting around. So I don't think there is any possibility of existing without geometry, and a lot of people tend to not think about its applications and think that geometry is just limited to what we are taught. Thank you. Hi everyone, this is Ayushi Yadav and my topic is vectors. Okay, so as soon as we enter the class 11th, we have chosen that we want to pursue science. As soon as we enter, the first chapter that we study is obviously the basic concepts that we use in physics, and the next chapter is vectors. So the vectors, it is kept the second chapter because its uses are vast and eminent, and that is why it is kept as the second chapter. And the major thing that we learn in the vectors is that we have to not only understand what are the physical quantities, but also what are their applications and where are they used. And that is why in vectors we learn about number of quantities as like velocity, acceleration. We also learn about current and what are these scalar quantities and the vector quantities, what are their differences and what applications they have in the real life. So that is why it is really important and we all must learn them. Thank you. Akshay Pratap and Arpit Katiyar. Hello everyone, I am Kriti Vasi from Faculty of Engineering, MU campus. My topic is fusion and fission reaction. In chemistry, the fusion and the fission reaction, as we all know, the chemistry which we learn in theory are basically comes from the practical application of our life.
So I would like to take some example of the fusion and fission. As we can all see, when two matters or two elements comes in contact with each other, it reacts and create a new component or new product. It is called the fusion. Whereas when you have to get back to the original component or original matter through which we have combined them together, they are called the fusion. So, likewise, if we see in our life, there are many components which are product of fusion. Like in the code. In the code we have many enzymes which fuse together and they react and show their reaction when we capture them for a long period of time. It is the reason why it colors and taste changes. It is due to their undergoing fusion reaction. And Manjari Jaiswal and Zara Khalid. नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। इस वक्तव्य का मेरा विषय है गति के नियम। हम सभी जानते हैं कि गति ही इस दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हमारे आसपास विभिन्न क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। जब हम कहीं जाते हैं या कोई वाहन या कोई मशीन भी चलती है तो भी गति के नियमों के अनुसार ही चलती है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से न्यूटन ने गति के जो 3 नियम प्रतिपादित किए उन्हें विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, गति के नियमों के माध्यम से ही हमारे विभिन्न मशीनें और कल कारखानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण भी संचालित किए जाते हैं। धन्यवाद। Good afternoon, dear friends and respected jury. My name is Manjari Jaiswal and I am pursuing BSc Genetics and Genomics from ULO. My topic for discussion is higher education in India. The most important part of higher education in India is that they are not combined to one section. That is, if you had pursued science in your 11th and 12th standard, you cannot pursue it later on. So it is not necessary here. You can pursue different fields like political sciences, genetics, genomics, zoology, botany, anything you want. And one is not compulsorily connected to another. And now the education system here is a little lengthy than compared to other states or other countries of world. But the most important part is we are considered to be the best in education system. The higher education in India may be of different fields like science, commerce, or various fields. Thank you. Ramsha Tariq and Shaleen Singh. Guys, just an important announcement that from 3 o'clock to 3:30, sir will be giving a lecture. Once this lecture is over at 3:30, we will have the prize distribution of Draw Your Science Inspiration, that was the poster making competition, along with the extempore competition for all participants and also for the winners. So please be here at sharp 3:30 to collect your awards and participation certificates. Thank you. Hello everyone, my name is Zara Khalil. I am pursuing MSc Food Physics and Technology from Lucknow University only, and my topic is programming languages. Since I think the 6th class, we all have been studying computers. The basis of programming languages constitutes of binary systems, zeros and ones. All the codes like 1, 2, 3 are named as 01, 001 respectively for whatever coding we are doing to process the program. There are different types of programming, C++, Java. In our school we are taught Java. Both of the programmings are very useful in today's life because from simple calculations to computers, each and every instrument which require to perform certain functions requires programming. And for that we have engineers for that, IT engineers, computer engineers, etc. I'm sorry if I missed someone.
And for all these programming languages can be Thanks, sir. thank you. Good afternoon everyone, my name is Ramsha Tariq and I'm from Department of Biochemistry. My topic for today is vectors. So vectors can be interpreted in many ways. In mathematical background, we can assume vectors as a quantity. Comparing it with scalar quantity, vector quantity is one that has both direction as well as magnitude. But not only it is limited to mathematical, but it is also included in science as well. Vectors are something which is used to transfer foreign DNA into a derived genome of or you can say a target genome. There are many kinds of vectors like co-integrate vectors, binary vectors. Co-integrate vectors include regions from two different plasmids, while binary vectors include regions from a single plasmid. And it is used in RDA technology and genetic engineering as well in order to produce genetically modified organisms. So, yeah, vectors are interpreted in many ways in mathematical and scientific also. Thank you, ma'am. Thank you. Om Shukla and Varun Dixit. Good afternoon everyone, I am Shaleen Singh from University of Lucknow, BSc 5th September, and my topic is organic compounds. Talking about organic compounds, they are present everywhere, like everywhere whichever sphere you see. So basically the main organic compounds which we talk about, carbohydrates and fats and proteins, which build up us, and the entire branch of chemistry which defines about organic compounds is actually organic chemistry. When we read about aldehydes or ketones, and then what do you see? They form a reaction that upholds everything, a reaction that makes up our universe, and actually the matter or the antimatter which actually reacts and follows everywhere. So see, organic chemistry, organic compounds are all related to us. That is when we are related to chemistry or to the biological field. When we talk about earthworms, the farming which we carry, the soil which gives us life and sprouts life is everywhere. So you see, organic is we, organic is life, organic is future, be organic and try to be organic. Thank you so much. Ashish Rajput and Vatsala. Hello, good evening everyone, respected jury. My topic is integration. My name is Om Shukla and I am a student of MSc Statistics. नहीं सही किया आपने My topic is integration. कैमरा As you all know that the integration is something that in a very basic sense we try to understand what is integration. Then it means to combine things. ओके ठीक है different units or different things. When we take the sum of all together, then it is usually done through integration. And corresponding to it, if we the opposite term to integration is differentiation, which talks about means dividing things into different parts. So this topic, one person gets. Thank you. Good afternoon everyone. I am Vatsala and I am from Food Processing and Technology Department, and my topic is the decline of interpersonal connections. So, in today's world, we all know पुराने ज़माने में जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे या एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना होता था, तो हमारे पास कोई भी ऐसा टेक्निकल मेथड नहीं हुआ करता था. हम लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे, जो कि बहुत ही 4-5 दिनों के बाद पहुंचा करता था, और फिर इंतजार के बाद हम लोग वहाँ से उसका रिप्लाई लिखकर भेजा करते
थे और यहाँ पर जिसने लेटर लिखा होता था वो भी उसका इंतजार करता था। लेकिन जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, आज हम लोगों के पास बहुत ही टेक्निकल तरीके हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के। जैसे कि हम लोग एक फोन के टच से एक दूसरे को फोन को यूज करके हम लोग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हो गई हैं जिसका हमारे जो पर्सनल कनेक्शंस हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे त्योहारों के और हमारे जो त्योहार होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता था जब हम लोग साथ में मिलकर मनाया करते थे, जबकि आज वो सब इन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की वजह से लैक हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टाइम। Thank you everyone. So I hope no participant is left now for the extempore competition. So with this we wrap up the extempore competition. We now have a lecture, and after the lecture gets over, Anupma Yadav. Come. Okay. So we have another participant. Can you please cheer for her? Hello, Professor Sudhir Mehrotra ji, please come. Good afternoon everyone, this is Anupma from Department of Zoology, and the title that I've got is How Listening Music Affects the Brain. So everyone knows that in today's stressful life, we are so much stressed that we need something to relax. And what is more better than music? So every sort of music is for relaxing the human brain. I think you have your own choice of music for which some people like pop songs, some relaxing slow songs. So every sort of brain is like designated for a different type of music. Not everyone is going to like single type of music. So every type of brain is having its own way of relaxing. Like there's also a gradation in age also. Like kids, they generally like pop music, and the elderly people, they generally like slow music with more meaningful songs rather than more music into it. So I think music is one of the best things to relax and to relax your brain. So I hope everyone is going to enjoy the music and relax themselves. Thank you. Thank you, Anupma. We should clap for her. She did not even take any time to think. So with this, we wrap up the extempore competition. Now we're going to have a lecture, and after that, the results of extempore and poster making, that is Royal Science Inspiration, will be announced. Please be there. Thank you. Now I request Professor Sudhir Mehrotra to introduce our next resource speaker. एक ही तो बच्चे, यही बचा। मिस्टर अभिषेक कहीं पर हैं? जियोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर, लैपटॉप लगाएं। Hello. So after the student related activity, which I feel so that the students participated with great enthusiasm, and मैं मेघना और शिवांगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेंट्स को साथ लेके भाग न जाए। पार्टिसिपेंट से कहिए कि वो यहाँ बैठे हैं लेक्चर सुनने के लिए। हम उन्हीं को सर्टिफिकेट और प्राइज देंगे जो यहाँ पर लेक्चर डॉक्टर जैन का सुनेंगे। जो लेक्चर नहीं सुनेंगे उनको ना प्राइज मिलेगा ना सर्टिफिकेट मिलेगा। जो है इन्होंने अनाउंस किया था कि डॉक्टर जैन के बाद प्राइज और सर्टिफिकेट मिलेगा, वो उन्हीं को मिलेगा जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ ली जाएगी। जो है तो इसलिए ये